संगत जी, आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और सत्संग के लिए इनवाइट करते हैं नितिका राज आंटी को। आंटी आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, टू प्यारी संगत जी, प्रणाम नमस्कार। मैं जब भी गुरु जी को मिलती थी मैं नमस्ते गुरु जी कहती थी, उस वक्त जय गुरु जी नहीं कहते थे, एंड गुरु जी ऐसे वापस हाथ जोड़ के नमस्ते कहते थे मुझे। आई फील सो ब्लेस्ड कि जस्ट गुरु जी की इस जन्म में आंखें पड़ी हम पे, वर्ड्स पड़े, उनकी ब्लेसिंग, उनकी एनर्जी, उनका ऑरा, और वो ऑरा ब्लेसिंग आंखें अभी तक हमारे ऊपर हैं। जय गुरु जी। तो इस लाइफ टाइम में हमारी मुलाकात गुरुजी से 2001 में हुई। मुझे बचपन से वाइट स्किन पैचेस थे सिंस आई वाज अबाउट 5 or 6 years ओल्ड। तो उस वक्त मेरी मॉम ने नोटिस किया और सडनली हो गए थे। तो ये क्या हुआ, ऐसे देख के उन्होंने धीरे धीरे किसी एक डॉक्टर के पास लेके गए, किसी और डॉक्टर के पास। ऐसे फास्ट फॉरवर्ड फ्रॉम द एज ऑफ 5 till 19 हम डॉक्टरों के यहाँ घूमते रहे। जहाँ पे हम रहते थे मिडिल ईस्ट में और इंडिया में बहुत सारे उपाय किए, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, सारी चीजें, गंगा जल का, वीगन होके, ये होके, बहुत 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 अलग अलग, और कुछ कड़वी कुछ कठिन मेडिकेशंस या ट्रीटमेंट्स मैंने किए थे। बट वट एवर माई मॉम यूज टू से आई यूज टू डू, शी वॉज लाइक my guru and my doctor and healer. She used to say यहाँ चलो, she had the goal of healing me. तो 2001 में हम एक फाइनल डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक दवाई दी। दवाई हम डॉक्टर से भी मिल लिए, दवाई भी ले ली, बट उसमें मॉम का मन नहीं था। तो शी सेड, दवाई लेके भी शी सेड, यू डोंट नीड अ डॉक्टर, यू नीड अ स्पिरिचुअल हीलर। इन द मीन टाइम डैड को एक संगत ने गुरुजी के बारे में बता चुके थे, एंड ही, हम लोग उस वक्त इंडिया में थे, एंड ही सेड यहाँ मेरे गुरुजी रहते हैं, आप आके मिलना। So everything came together at once when Guruji wanted to call us to him. जब गुरुजी हमें बुलाना चाह रहे थे, for whatever reason we were not ready. They say कि the Guru appears when the disciple is ready. So Guruji called us to him at that time. हम गए, एंड मेरी ऑनेस्टली कोई ज्यादा होप नहीं थी। आई थॉट अब बिगिन जर्नी होगी जब हम स्पिरिचुअल हीलर्स और संतों के दर्शन करेंगे, हर जगह घूमेंगे, यू नो दैट वी वुड बिगिन अनदर पाथ ऑफ परसूट। बट टू माई ग्रेट सरप्राइज, गुरुजी के पास एक बार ही जाके हम लाइफ में कभी भी और कहीं और नहीं गए। माई मॉम वॉज द फर्स्ट टू कनेक्ट। उनका सत्संग आपने सुना होगा, बट शॉर्ट में आई से दैट जब वो पहली बारी हम गए, गुरुजी ने ऐसे हमें कुछ कहा नहीं, कुछ पूछा नहीं, कहाँ से आए हो, ऐसे सिंपल सरफेस लेवल क्वेश्चंस। हम बैठ गए, हमें प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद जो गुरुजी हाथ से देते थे, फिर लंगर प्रसाद मिला। उस वक्त उन दिनों सबको गुरुजी नहीं बिठाते थे लंगर के लिए, सो वी थॉट इट वाज स्पेशल कि गुरुजी ने बिठाया। एंड देन गुरुजी सेड कल आना। तो वी सेड हम तो कल वैष्णो देवी जा रहे हैं, बिकॉज वी यूज्ड टू गो, हम बहुत बारी वो पिलग्रिमेज कर चुके थे, एंड वी हैड अ प्लान टू गो द नेक्स्ट डे। फिर गुरुजी ने डांट के कहा, फिर यहाँ क्यों आए हो, जा वैष्णो देवी। फिर आफ्टर अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन ओवरनाइट, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, हम नहीं गए कि वी थॉट कि एटलीस्ट एक रोक आ गया है, तो दैट ट्रिप इज नॉट ब्लेस्ड इवन इफ वी गो लेटर। अभी जाने का इट डजंट फील राइट। तो हम वापस गुरुजी के पास आ गए अगले दिन, एंड गुरुजी काइंड ऑफ लविंगली टीज्ड अस, आ गए वैष्णो देवी वाले। एंड देन फॉर द नेक्स्ट 2 years हम जब भी आते थे यूज्ड टू से, लो आ गए वैष्णो देवी वाले। तो ऐसे गुरुजी ने हमें बहुत डांटा, बहुत टीज किया, बहुत प्यार किया, जो भी था अच्छा किया। गुरुजी ने हमें अपने पास रख ही लिया। तो मैं ऑलरेडी यूएस में पढ़ती थी। मेरी बाकी फैमिली यूज्ड टू लिव क्लोजर टू गुरुजी, एंड वो फ्रीक्वेंटली जाया करते थे। आई लव्ड गुरुजी, आई डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आई डिडंट थिंक ही वाज गॉड, बट आई लव्ड गुरुजी। एंड आई यूज्ड टू थिंक कि जो भी है यहाँ पे हमें एक बहुत पीस मिलती थी।
we are all very high energy people. We all have a lot of goals. हम सब मेरी फैमिली में बहुत एक्टिव हैं कि ये करना चाहिए, whether it's सेवा or it's business or it's for family or it's for community or society or work. पर गुरुजी के पास जाके हमें एक ठहर आ जाता था जो मैंने पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था. हम सब एकदम शांत हो जाते थे, स्टिल हो जाते थे. We used to stay in one place and we had no other purpose but to be at Guruji's feet and just absorb the peace, the beauty, the blessings. तो without understanding anything about divinity, मुझे वहां बहुत अच्छा लगता था कि हम गुरुजी के पास बैठे हैं. This is the best time I've had in my life with my family. So जब भी हम जाते थे मुझे बहुत खुशी होती थी. बट बिकॉज ऑफ द यूएस डिस्टेंस एंड कॉलेज स्केड्यूल मैं हार्डली साल में एक बार ही भी नहीं जा पाती थी. मे बी वंस एट द मोस्ट, बट दैट वुड बी कि छुट्टियों में मिडल ईस्ट जा रहे हैं और वहां से किसी तरह से इंडिया जा रहे हैं. सो इट वॉज रेयर. शुरू में गुरुजी ने मुझे एक कलश दे दिया था ब्लेस करके, एंड वी यूज्ड टू डू वट एवर द इंस्ट्रक्शन वॉज. चावल छोड़ना है, कलश का अमृत सुबह पीना है फर्स्ट थिंग. तो 2 साल हो गए. जब मेरा अंडरग्रेड खत्म हुआ, आई हैड अ ब्रेक. 4 महीने का शायद ब्रेक था बिटवीन माई अंडरग्रेड एंड मास्टर्स. तो 1-1.5 महीना मैं इंडिया में रही, दिल्ली में. एंड इट वॉज मी, माई मॉम एंड माई नानी. और उन दिनों 4 दिन सत्संग होता था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे. तो हम जाते थे एम्पायर स्टेट, छोटे मंदिर. एंड वी वुड ऑल जस्ट हैड अ ग्रेट टाइम विद गुरुजी. तो उस वक्त 2 सत्संग गुरुजी बार बार हमें सुनवाते थे, which was I had heard Sabina Aunty satsang, and particularly that satsang की जब वो एन वक्त आया जब उनको सांस नहीं आ रहा था, तब उनका गुरु काम आया. Only when she thought of Guruji, nobody could bring her the oxygen, but when she thought of Guruji, उनको सांस आ गया. And how Guruji had changed her daughter's name because she had said कि एक हमारे नाम के साथ हमारी जो सोल के ना कर्म टाइड होते हैं. तो जब गुरुजी नाम बदलते थे तो गुरुजी वाज ट्राइंग टू कट द कर्म दैट वाज अटैच्ड टू दैट सोल्स पाथ एंड जर्नी. और कुछ कर्म ऐसे थे जो मतलब कुछ भी हम कर्म करके नहीं काट सकते थे. वो गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती थी. ही वाज ट्राइंग टू अवर्ट अ डिजास्टरस पाथ और द एंड ऑफ लाइफ बाय चेंजिंग द नेम. तो ये सत्संग में बहुत 20 साल पहले सुन चुकी थी एंड दैट रियली स्ट्रक मी. तो उसके बाद द अदर सत्संग आई हैड हर्ड वाज फ्रॉम उषा आंटी, जो उस वक्त सियाटल में सिंगापुर में रहती थी. एंड सिमिलरली सांस की बात थी. इट वाज हर डॉटर्स एस्थमा एंड ये सारे सत्संग मेरे दिल में बहुत बैठ गए थे. I never understood why and how 10-15 years later it became very meaningful for us. तो ये गुरुजी का मैजिक था. गुरुजी was very mysterious. He is still. वो कुछ कहते थे ऐसा करो. You don't know why, but वो करना होता था. उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता था. वो हमें जानने की जरूरत नहीं है. Over time and patience and life, things would unfold. बाद में हमें वो समझ आ ही नहीं सकती उस वक्त में जो बाद में लाइफ के इवेंट्स हमें दिखाते थे या समझाते थे. तो अगर गुरुजी कुछ भी करने को कहते थे हमें कर देना चाहिए. सो उन दिनों में in that 1.5 महीना when I got to stay in India, and I think it was around 2005. तो हम जाते थे and people used to say कि Guruji is omniscient, ever present. गुरुजी आपकी हर बात सुन रहे हैं. गुरुजी आपके साथ घर पे भी हैं. गुरुजी को सब कुछ पता है. गुरुजी आपके दिल में है. गुरुजी is always with you. It felt very magical to me, and I always believed in magic and God. मैंने believe सब कुछ कर लिया, but ऐसे I didn't need to practice that belief because we used to still try to physically see Guruji. तो एक दिन ट्यूसडे रात को किसी वजह से मैं बहुत परेशान थी और मैं उस दिन रात को सो नहीं पा रही थी. तो 12 से 6 सुबह, रात के 12 बजे से सुबह 6 बजे तक मैं बहुत ही एजिटेटेड रही. जो भी था, गुस्सा, नाराजगी, किसी से लड़ाई हुई थी, बहुत ही मेंटली डिस्टर्ब थी. तो मैं सारी रात नहीं सो पाई.
और फिर मुझे वो बातें याद आई बिकॉज आई वॉज थिंकिंग आई विश आई कुड बी विद गुरु जी। तो पहली बारी जब वो फीलिंग आई ना कि आई एम डिस्टर्ब्ड एंड आई वांट टू बी विद गुरु जी की व्हाई इज इट ट्यूसडे, व्हाई इज इट नॉट थर्सडे फ्राइडे। तो जब मुझे वो फीलिंग याद आई उस अंधेरे में, मुझे गुरुजी की बातें याद आने लगी जो संगत ने समझाई थी कि गुरुजी इज ऑलवेज विद यू, ही कैन ऑलवेज बी विद यू, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर हिम। सो आई थॉट लेट मी ट्राई। सुबह 6 बजे, for whatever reason, Guruji came through to me by reminding me of this message that you can reach out to Guruji to call him to you because he's there. तो मैंने सोचा let me think about Guruji। इतनी जल्दी इस थॉट के बाद मुझे नींद आ गई और मुझे गुरुजी के दर्शन हो गए अपनी स्लीप में। सो दैट इज द फर्स्ट मोस्ट पावरफुल विजन एंड लेसन दैट आई वांट टू शेयर विद ऑल संगत कि गुरुजी को बुलाने में, गुरुजी के बारे में सोचने में एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड का फर्क भी नहीं था दैट आई फेल asleep। जो नींद मुझे सारी रात नहीं आई थी, by thinking about Guruji and saying Guruji I want you to be with me or I want to be with you, एक सेकंड में मुझे नींद आ गई और उस नींद में गुरुजी ने मुझे भर भर के दर्शन लिए। और वो दर्शन ये थे कि गुरुजी और मैं एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं। वो एक प्रॉपर प्लेग्राउंड है जैसे चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड होता है विद स्विंग्स एंड स्लाइड्स एंड क्लाइंबिंग स्ट्रक्चर्स। आई एम फुल्ली ग्रोन एज आई वाज इन व्हाटएवर एज आई वाज देन इन माय 20s and Guruji is fully his shape and size. I can't remember वो चोले में थे या पैंट शर्ट में थे, क्या पहना था, I don't remember, but Guruji was in his form and I was in my form and we were playing the whole night। We were playing and laughing and जैसे आपको जो best time होता है ना with a friend and you're having just a lot of fun, lots of laughter and joy, that is all I remember of that night कि बहुत ही खुश थी मैं। And I woke up completely transformed, completely happy, and there's just no words to describe that feeling। वो जो फीलिंग आती है, जो इंटरनल गुरुजी आपका जो दिल ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, वो कोई नहीं कर सकता, वो कोई ह्यूमन नहीं कर सकता, वो सिर्फ गुरुजी की मेहर कर सकती है। When Guruji's grace is upon you and your heart is happy no matter what is going on around you, that is the first time I experienced that in that way, which became a lesson for life। जब गुरुजी ने चोला छोड़ा उसके बाद ये लेसन, मतलब आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग इट टू रिमेंबर दैट गुरुजी इज ऑलवेज विद मी एंड आई एम नेवर अलोन। तो ये एक वो पहला दर्शन था। देन आई ऑलवेज यूज्ड टू विश कि गुरुजी हैड टोल्ड माय मॉम ऐसे कर या वैसे कर, एंड माय मॉम यूज्ड टू प्रे अ लॉट। तो गुरुजी सेड तू मॉल जाके मूवी देख, फैमिली के साथ मजे कर। सो गुरुजी गिव्स एवरीबॉडी a specific दवाई, a specific medicine or blessing or instruction जो उनके लिए ठीक है। He didn't tell me कि तू मॉल जाके मूवी देख, because I never used to pray और properly मुझे कुछ deep meaning नहीं पता था। I just had a belief in God, but ऐसे मुझे prayer के बारे में, meditation के बारे में कुछ नहीं पता था। So Guruji, but I wanted Guruji to give me some homework because I wanted कि उससे मुझे एक तो ये फीलिंग आएगा कि गुरुजी ने अपनी स्टूडेंट को अपनी क्लास में लिया है, कि मुझे एक्सेप्ट किया है या मुझे देखा है, ही इज अवेयर कि आई एम ऑल्सो देयर। मेन कॉन्टैक्ट यूज्ड टू बी विद माय पेरेंट्स, तो मुझे ऐसा नहीं लगता था कि हैज गुरुजी नोटिस्ड मी। दैट वाज द फीलिंग कि इतनी सारी संगत थी, गुरुजी हैड नेवर स्पोकन टू मी, सो आई यूज्ड टू फील कि गुरुजी अगर मुझसे कुछ कहेंगे तो मुझे लगेगा कि हैज नोटिस्ड मी, कि आई एम ऑल्सो देयर, आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट। एंड अगर गुरुजी मुझे कुछ होमवर्क देंगे, इफ ही टेल्स मी टू डू समथिंग, तो मुझे लगेगा कि गुरुजी ने मुझे अपनी देन आई एम ऑन हिज पाथ, कि गुरुजी ने मुझे कुछ करने को कहा है, देन आई एम डूइंग दैट, देन आई एम ऑन द राइट पाथ एज गाइडेड बाय गुरुजी। तो ये विश भी गुरुजी ने फुलफिल कर दी कि गुरुजी मेरे सपने में आए एंड गुरुजी सेड तू शिव पुराण पढ़। So my connection with Guruji, even when Guruji was in his physical form, was always through my dreams. Guruji हमेशा मुझे ड्रीम में आके दर्शन देते थे and सामने से कभी बात नहीं करते थे। So Guruji came in my dream and said, "तू शिव पुराण पढ़." So I became very happy. Guruji answered my wish. I wanted a homework from him and then I accepted that homework. कुछ भी समझ में नहीं आया, but I tried to read it and start to finish कि पेजेस पे आंखों पे वर्ड्स पढ़ रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड, कुछ भी समझ में नहीं आया, बट वो सरफेस लेवल पे, उस लेवल पे वो होमवर्क मैंने अपनी तरफ से कोशिश की या गुरुजी ने मुझसे कोशिश करवाई।
Then I had a wish. These are all wishes of the heart. These are not things I asked from Guruji. I never said कि Guruji आप मुझे ऐसा करो आप. These were just the wishes in my heart. Then I used to wish कि Guruji, भगवान जो भी हैं मेरे सर पर हाथ रखें. I don't know why I had that wish, but I wished it. एक दिन मुझे दर्शन हुए कि मैं एक शिव मंदिर में हूँ. एक बहुत बड़ा सा मंदिर है और बहुत सारी मूर्तियां हैं और मैं सामने जाके खड़ी होती हूँ. एक फुल्ली ब्लैक मूर्ति है शिव जी की, वेरी बिग एंड पावरफुल, एक स्टोन मूर्ति है. मैं सामने खड़ी होती हूँ एंड शिव जी का हाथ ऊपर होता है, वो जो निडर निर्भय मुद्रा में होता है या ब्लेसिंग का मुद्रा होता है, यू नो कि एक हाथ इज अप फेसिंग टुवर्ड्स whoever is standing in front. और धीरे धीरे वो स्टोन की मूर्ति, वो शिव जी का हाथ धीरे धीरे डिसेंड हुआ, बेंड हुआ, मेरे सर पे आया और शिव जी ने मेरे सर पे एक हाथ रख दिया. जय गुरु जी. वो इतना बड़ा ब्लेसिंग, इतना बड़ा प्रसाद, या वेरी सिंपली माय हार्ट्स विश वाज फुलफिल्ड and I just got something very precious which I wanted. Jai Guru Ji. Very recently, कल परसों गणेश चतुर्थी थी. So I've always had a connection with Ganesh Ji. For a lot of my life, मैं जैसे अकेली घूमी हूँ in unknown territory जो, and I've always thought of myself as a very clueless person who is not street smart, जिसको दुनिया के रास्ते नहीं समझ में आते, जिसको worldly politics नहीं समझ में आते. So in that sense, quite clueless. And so I've always felt that Ganeshji has really protected me. And not as a separate from Guruji. Guruji has sent Ganeshji. Ganeshji is connected to Guruji, is to say Sada Putar hai. So Ganeshji ke saath, for whatever reason, you know, I would see the elephant sign. Ganeshji would always appear. And I've always felt Guruji's protection through Ganeshji. तो यहाँ पे एक संगत ने गणेश चतुर्थी की पूजा रखी थी एंड घर से दूर था. सो वी हैड द इंटेंशन ऑफ गोइंग, वी वांटेड टू गो, बट द मॉर्निंग ऑफ वेडनेसडे जब मैं उठी, आई वाज फीलिंग वेरी टायर्ड एंड अनवेल कि गले में दर्द हो रहा है या पता नहीं जा पाएंगे. एंड आई जस्ट थॉट कि जाना चाहिए कि नहीं. मेरा मन तो था, बट आई थॉट मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता. आई डोंट इवन अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ गणेश चतुर्थी. Again, it was a thought and a wish. I wish I could understand the significance of Ganesh Chaturthi. Then at least if I go, you're going with meaning and purpose. सिर्फ body नहीं हिला रहे हैं कि हम वहां पे जाके बैठ गए, but we don't understand anything. We will still not, probably I will not understand anything anyways. But at least अगर कुछ meaning, कुछ spiritual education होता, कुछ significance, कुछ lesson होता, तो we can go with a deeper intention. And lo and behold, I had an email from a Sangat, beloved Sangat Aunty, in my inbox, and उसपे लिखा था, here is the significance of Ganesh Chaturthi. I just felt so blessed. I just felt not even blessed, I felt कि Guruji listens. No, without even asking a question or without even asking for anything, हमारी जो विश होती है फॉर अ डीपर कनेक्शन विद गॉड और फॉर डीपर स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग, वो गुरुजी देते हैं. एंड जस्ट अ सिंपल विश ऑफ द हार्ट टू अंडरस्टैंड दिस मीनिंग, इट अपीयर्ड. और उसमें लिखा था, यू नो, आई हैड ऑलवेज हर्ड दैट स्टोरी, ऑलवेज यूज्ड टू स्टे विद मी, कि यू नो पार्वती जी वाज टेकिंग अ शावर, शी क्रिएटेड गणेश जी टू गार्ड द डोर, एंड शिव जी आए और उन्होंने उनको ब्लॉक किया और शिव जी ने गणेश जी का सर काट दिया और फिर दूसरा एलिफेंट का सर लेकर आए. एंड देन ये तो मैंने सुना था, विच इज फॉर वट एवर रीजन दैट पार्ट ऑफ यू नो दैट वाज पार्ट ऑफ द स्टोरी ऑलवेज. और इस मैसेज में एक डीपर मीनिंग था कि बिकॉज पार्वती जी हैड क्रिएटेड गणेश जी आउट ऑफ द धूल ऑन हर बॉडी, तो वो बॉडी कॉन्शियसनेस के बने थे. It was an email from Brahma Kumaris, and कि वो because of that body consciousness, there was a disconnection to the divine.
So Ganeshji did not know who his true spiritual father was, which is Lord God, Shivji. In his sense, both the father, but in our sense also our divine father. That because we have a head, we have an ego. Because we have a body, we are in body consciousness. So we don't know who our true divine parent is. That we are actually a part of God. That was a deeper meaning जो मैंने कभी समझा नहीं था. And I think कि ये भी क्वेश्चन पोस्ट किया था कि अगर शिवजी 10 साल के बाद मेडिटेशन करके आए थे, उनको इतना गुस्सा कैसे आया कि उन्होंने गुस्से में सर काट दिया. He was removing the egoic head to replace it with the divine Godhead of that which was Shivji's child. That was just a deeper meaning which deepened my love for Ganeshji, Guruji, all part of one divine family, and whatever place we have in that family, we are also, whether we are part of God or God is part of us, I don't understand, but it is all one. So ऐसे साल चलते रहे. In that time, the only thing that Guruji ever said to me is, well, two things. My sister and I used to go together. My sister is both older than me and taller than me. So हम जाते थे हमेशा एक साथ. And Guruji used to just look at us and say, तू बड़ी है कि छोटी? तू बड़ी है कि छोटी? And we would look very puzzled because Guruji, who knows all, how could he not know such a simple thing, right? कि हाइट में भी वो बड़ी है, एज में भी वो बड़ी है, हर तरीके से वो स्मार्ट भी ज्यादा है. But in any way, I thought I was just the clueless younger child. But always Guruji used to ask us this question. So we used to just smile, and sometimes we would answer, sometimes we would not, because even the question didn't make sense. How could Guruji not know? Guruji knows. The other thing he used to say to me is, in those days, first he said it to my parents a lot, especially I guess to my mom, ki kudi ka vyah kar. That was me. And vyah kar. And only once in my life, and mom used to say, nahi, I have an older daughter, pehle uska hoga, wo hoga. So, in that time we followed the human tradition and family structure more than we followed the divine command, which of course we learned, we have to follow the divine command, not our human family structures. And in that sense, kaun badi, kaun choti, who knows what means what. But humne wo baat nahi mani. I tried, at that time, I tried to convince my boyfriend of the time that we should get married. Even he was not convinced. Wo, I think as permitted or wished by Guruji, wo mile the, but I should just say, I myself, I'm not sure if I was ready to get married or not, but Guruji said so. So I said, let's get married. Guruji ने एक ही बारी मुझे चरण सेवा दी अपनी. I was completely unprepared. मैंने एक जो मेरा एक दुपट्टा था सूट का, it was very slippery. वो बार गिरे. मेरे लंबे से बाल खुले. दिल्ली में गर्मी, फैन चल रहा है, कहीं दुपट्टा घूम रहा है, कहीं मेरे बाल मुंह में आ रहे हैं. बड़ी बैडली मैंने गुरुजी की चरण सेवा की होगी. Constantly, lifting my hands to put the hair behind the ears. So, and manage all of that. So I'll just say from that experience humbly कि हमारा जो खुद का चूल्हा होना चाहिए. गुरुजी always used to say, मैंने कल भी सुना था संगत में कि बन ठन के आओ. I don't know what the reason was, and Guruji हमेशा इतने beautiful लगते थे कि at the very least we should look equally beautiful, like we are going to a very special place. If you are going to get, अब सबका style अलग होता है. Some people like to dress up a lot, and some people dress up more simply. The point is not that everyone has to go act like someone else, but in our own standard, हम जिस चीज को हाई स्टैंडर्ड समझते हैं कि we would dress up to the best of our ability for something very special and sacred, we should dress our best. We should dress in our divine dignity. That's all I'll say, whatever that means. And modestly, as people were always dressed in Guruji's darbar. So, that was a lesson. If you're wearing a dupatta, it should be thin. Like nothing about our chola should be a distraction from meditation. Not for our own meditation, not for someone else's meditation. कि हम कुछ झन कर रहे हैं. It is the now
sound if I'm wearing a lot of bangles or whatever. Should not be disturbing to someone else. It should be simple and elegant. Ki we are in here to pray. We are in a mandir. So we are dressed with that kind of divine simplicity, but also elegance for God. And baal bande hone chahiye for those of us with long hair. Ki again, it's not getting in the way of prayer. So I'm doing Guruji's charan seva as he's saying, but really he was saying to me कि तू भाग के शादी कर ले. I mean, in another lifetime, what a beautiful, hilarious message to receive from a guru. And again, I at that time was more scared of my parents than of Guruji, and I didn't listen either. I heard it, I was awestruck, I was laughing, and I didn't even understand Guruji's Punjabi. I said, "Mom, Guruji क्या कह रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा." She laughed and she said, "वो कह रहे हैं भाग के शादी कर ले." So मम्मी के सामने ही कह रहे थे मुझे. ठीक है, नहीं की. However, we could ultimately. It took another 2 years, and in 2007, when I got married. That marriage was very short-lived. उसका जो blessing का time था वो निकल गया था. We were too late. And I accept responsibility for my mistakes. Jai Guruji, sorry Guruji. But जब गुरुजी कुछ करने को कहते हैं वो हमें immediately करना होता है. उस blessing का एक window of opportunity होता है जिसमें गुरुजी हमारे डेस्टिनी बदल सकते हैं, कर्म काट सकते हैं, जो भी कर सकते हैं, मैनिपुलेट. God has to move energy, but our karmic path has its own energy. तो जो भी वो टाइम था वो निकल गया. That marriage ended shortly, and it caused a lot of pain to me, my family, and everyone involved. And I had deep repentance for all the pain that was caused for many years to come. उसके बाद, because I lived in Seattle, Guruji's divine blessing that Guruji had sent a Sangat to Seattle. He had instructed Usha Aunty to move back to Seattle after many years in Singapore. तो जब गुरुजी ने चोला छोड़ा, मैं in that sense अकेली नहीं थी. जो sorrow हमें feel हो रहा था for those of us who had become physically attached to Guruji's physical form, और समझ नहीं थी कि गुरुजी का divine form is eternal and limitless, और अभी और बहुत connection, blessing, meher is available, पता नहीं था. So उस वक्त बहुत grief था, बहुत रोए, but I had a place to go. I was able to go to auntie and uncle's house, to Guruji Nivas, as that mandir is named. And उनके पास गुरुजी का एक स्वरूप था, एक दिया था, and वहाँ पे our tears and sorrow poured into that. But उनके जो family friends थे, मेरी जो friends थे, all asking कि ये कौन गए हैं जो आप इतना रो रहे हैं, कोई family member हैं. Until that time we had not even spoken of Guruji to people in the West. I don't know about them, but I had not. Hardly anyone knew who Guruji was in our lives, but Guruji was everything in our lives, but almost like a public secret outside of Satsang. So at that time, by trying to explain who Guruji was, it became a Satsang. गुरुजी की महिमा के बारे में बात करने में जो लोग वहां थे, जो गुरुजी से कभी मिले नहीं थे, उनको गुरुजी की फ्रेग्रेंस आने लगी. दिए में, स्वरूप में, उस प्रेजेंस में, people started to have Guruji's darshan. People started to feel Guruji's blessings just by speaking of Guruji. So it is so powerful to speak of Guruji's blessings, to speak of Guruji's divine powers. और जो देखिए हम जो बोल सकते हैं वो भी लिमिटेड है, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड जो प्रोसेस करेगा कि ये गुरुजी की ब्लेसिंग थी, मैं तो उसी के बारे में बोल पाऊंगी. गुरुजी की ब्लेसिंग हमारे ऊपर इतनी बड़ी है और इतनी एंडलेस है और इतनी प्रीवियस लाइफ्स, करंट लाइफ, फ्यूचर लाइफ्स की है और इतनी सारी है जो इनविजिबल एंड अनरिकग्नाइज्ड है कि लाख शुक्राना भी काफी नहीं है और हम उसके बारे में बोल भी नहीं पाएंगे.
तो जो फ्रैक्शन ऑफ ब्लेसिंग्स या सत्संग हमें पता है, जिनके बारे में हम बोल पाए, एटलीस्ट वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू शेयर दोज, बिकॉज उतने में ही इतने लोगों का कनेक्शन, ब्लेसिंग और हीलिंग होनी शुरू हो गई. वन आंटी हु हैड बीन डिप्रेस्ड फॉर 30 years, शी यूज्ड टू से, मुझे किसी से, मैं जिस घर पे अकेले बैठती हूँ, आई नेवर फेल्ट लाइक स्माइलिंग, नेवर लेफ्ट द हाउस. शी स्टार्टेड टू जस्ट फील अ लाइटनेस ऑफ हार्ट. वो खुश हो गई. आउट ऑफ नोवेयर, फ्रॉम नथिंग, उनका दिल हल्का हो गया by being connected to this satsang that happened in Guruji's samadhi. She started to feel happy. She started to feel joy. And Guruji's ultimate blessing, ja aish kar. If you have your Guru's blessing, we have nothing to do but aish karo. And by aish, I don't mean carelessness, I mean carefreeness. That we could live in a way that we are so abundantly blessed that we have to worry about nothing. That kind of feeling. So this one auntie experienced that joy of heart, that lightness of heart, which came out of nowhere, but it came out of satsang. And she connected it to satsang and she became a lifelong devotee of Guruji. So not everyone's blessing looks like healing cancer or saving a life, although there is plenty of that and we are so grateful for that. But to be alive and to be able to be happy and grateful is a great blessing. So hum sabki lives mein we have so many things. Like in my case, I'm living in a beautiful home, have a wonderful family, have a wonderful Sangat. But for any of us in the human way, we could be fixated on what we don't have. मेरी एक दूसरी शादी भी हुई थी, वो भी खत्म हो गई. So I was not blessed. The path of partnership was not blessed for me for whatever reason. But that doesn't mean that I should be sitting and crying about it कि मेरे पास ये एक चीज नहीं है. I have a million other blessings, and so we can never compare to someone else कि किसी के पास कुछ अच्छा है, किसी के पास कोई और कठिनाई है. We don't know कि किसी की लाइफ में क्या उनकी कार्मिक जर्नी है और या क्या उनकी सफरिंग है. So never compare yourself to anyone else. गुरुजी ने एक बारी किसी और को भी ये वर्ड्स बोले थे कि जेलसी छोड़ दे. We should never think कि किसी और के पास कुछ है और मेरे पास वो चीज नहीं. All we can do is count our blessings and give million shukranas for what we do have, because what we have is also endless and countless. So if we can stay focused on Guruji's satsang, कि गुरुजी के सत्संग में हम ये कह सकते हैं कि जॉब है, इमिग्रेशन सिक्योरिटी है, घर है, फैमिली है, हेल्थ है, गुरुजी के सत्संग करने की ग्रेस है कि गुरुजी ने अपना सत्संग हमारी थ्रू करवाया या और उसके लिए सेवादार भेजे और लोग आए सत्संग में, and all of that, and by that Guruji's presence grew even more, his blessings and his vibrations grew even more, and we could feel anything we think कि हमने किया है गुरुजी के लिए या सत्संग के लिए, हमने नहीं किया है, गुरुजी ने करवाया है और उसके थ्रू हमें और ब्लेस करवाया है. We are just doing nothing, we are just instruments of God, and we are blessed to be used as that instrument that Guruji can do whatever is Guruji's will and grace in the world. तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें थी which even in recent times I'll share a brief darshan that I had. There are so many countless blessings. Whatever Guruji wills and wants to be shared today is what will be shared. So I went to sleep and in my dream, I heard my mom telling me and my sister कि do Guruji's mantra jap 3 बारी करके देखो. It was almost like a challenge, as though we were not believing in the power of mantra jap, and we were saying उससे क्या होता है. Not that we were actually saying that, and not that I actually think that, but the way our parents are always inspiring us to do better and do more, and I, as a child, am always lagging behind and trying to get to that place. Sometimes you have to be dragged kicking and screaming to the next place of learning. So my mom is telling me in the dream कि 3 times mantra jap करो. Almost unspoken is wait and see what happens. तो मैंने किया. In the dream, I closed my eyes and I did the mantra jap once
Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai, Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Mentally, quietly, I did it. Nothing happened. And in my own mind, I'm almost saying like a challenge. Again, unspoken, but see, nothing happened. Second time I did it, pause, nothing. Third time I did it, pause, and Guruji appeared. And with Guruji's two hands, he gave me a very precious gift. And I was so stunned and amazed. I mean, ये मैं आपको last week की बात बता रही हूँ. Jai Guruji, Shukrana Guruji. That Guruji is patiently, lovingly teaching us the same lessons over and over. Guruji's mantra jap is very powerful. And forget doing it lakh times. 3 बारी करने से इतनी बड़ी चीज like Guruji appeared in front of me. Jai Guruji. So I went to Hawaii a few years ago. I was very burnt out at work and I needed to go, and I just had the feeling of like I need some healing and I need to go to a healing place. And Hawaii has 8 islands. I have already been to 2 of them, so I thought I'll go somewhere else. So one day I woke up और मेरे मन में एक नाम था, Kauai. So Guruji's, I just felt that it was a message I have to go to Kauai. I just woke up with that thought and I thought, okay, that'll be one of the places I go. मुझे उस आइलैंड के बारे में कुछ नहीं पता था, मुझे सारे आइलैंड्स के ठीक से नाम भी नहीं पता थे. But I woke up with this message and I followed that intuition. तो मैं गई and I made the trip plan and ऐसे करके I reached and I started the journey in Kauai. मैं एक दोपहर को वहां पे पहुंची and दोपहर के 2-2:30 बजे थे and it was a long journey and I was hungry and I was tired. तो अपने bags अपने lodging पे drop off करके I thought let me go find some food. And as a vegetarian, the first easy food is pizza. तो मैंने एक pizza restaurant ढूंढा और मैं गई. So I drove there. I had the food. उसके बाद जब मैं निकलने लगी, I thought okay, let me go back and freshen up and go to the beach. यहाँ पे beach is the most blessed, powerful thing. मुझे जाना है. But something stopped me. जैसे आप सोचिए आपकी body के अंदर either if I can't describe it well, but जैसे एक like when you've eaten food, you feel full. When you're hungry, you feel empty. And beach mein, if you have digested your food, you feel light. Otherwise, when you've eaten too much, you feel heavy. So in that sense, there was a kind of energy like a weight. जैसे एक पत्थर हो या कोई weight सा हो गया कि you cannot leave right now. यहाँ पे कुछ है. मैं एक direction में चलूं तो वो weight heavy हो जाए, like I'm going in the wrong direction. मैं दूसरे direction में चलूं तो वो weight light हो जाए, like I'm going in the right direction. So I had a strong intuition कि यहाँ पे कुछ है, मुझे कुछ ढूंढना है. I'm completely clueless, but I'm following this intuition. तो मैं चल रही हूँ, बहुत सारी दुकानें हैं. The direction it was taking me, the shops are numbered from 30 to 1, and basically I walked from 29 onwards, and until I reach shop number 3, nothing has happened. But that feeling is getting lighter and stronger. I enter shop number 2, पूरी दुकान देख ली, कुछ नहीं था. And entered, वो energy shift नहीं हुई है. So I thought it's not here. I entered दुकान number 1 and I thought ये तो final जगह है. But that feeling grew full of light. I went inside and it was a shop full of soaps and candles. I mean, normally speaking, I like that kind of thing. But it was my first day and my first hour. I was not trying to buy anything or buy soaps and candles or souvenirs or gifts or anything. Just wanted to arrive. अब मैं वो feeling इतनी light and bright होगी, like the sun is lit within me and outside of me. तो मैं सोचूं यही है. मैं ध्यान से एक एक सोप और एक एक कैंडल को देखूं कि मैं क्या ढूंढ रही हूँ गुरुजी, मैं क्या ढूंढ रही हूँ. And finally, in one corner, I see Ganesh. I am so stunned. बस मैं रुक जाती हूँ. एक छोटी सी मूर्ति है गणेश जी की, just tucked next to a soap. And उसपे एक लाल टीका, मतलब somebody there is not, it's not, यहाँ पे West में the image of Ganesh ji has become very popular. Some people take it lightly and for some people it may have a deeper meaning.
But यहाँ पे, by seeing that Lal Tika, I understood that somebody has kept Ganesh Ji's presence very much alive. Somebody really believes here. तो मैं गई. So जो shopkeeper थी वहां पर, I was about to take a photo of this blessing so I could share this satsang. And I went to the shopkeeper and I said, is it okay if I take a picture of Ganesh Ji? Because sometimes people mind if you take a picture, I don't know, for whatever reason, I wanted to ask. And she just lit up. She smiled a lot. She said, so you're also a believer? Yeah, please feel free. And she is a white lady. So I went and I took the picture and then I went back to her and then she started a conversation with me because she was very interested by the fact that I noticed Ganesh Ji and took a picture. And then she said, my name is Adi. I have kept my name in honor of Ganesh Ji. And Ganesh Ji has blessed and healed my life. And she said, do you know there is a Shiv Mandir on this island? And I had a vague memory कि हाँ मैंने कुछ ऐसा देखा था कवाई के बारे में बट मैंने सोचा नहीं. And then she said, ऐसे जाते हैं, मंदिर में आरती होती है, you must go there. And I just felt like, what is happening? This is my first hour in Hawaii on this island, Kauai, that Guruji sent me to. And I've met this woman and I've met Ganesh Ji and she's sending me to the Shiv Mandir. She said, वहां पे एक रुद्राक्ष का forest है. It is a very divine place. वहां पे it's a monastery. वहां पे, you must go there. And I obviously felt supremely blessed. So Guruji can come from anywhere, send anyone to take you anywhere. You just have to listen to that inner voice. Because जब गुरुजी हमारे दिल में बैठ जाते हैं, from inside he's driving the car and telling you where to go and where not to go. If I walk in a direction and it feels bad, I turn around. Energetically, when God is within you, He will take you everywhere which is good and right for you and remove you from anywhere that feels bad. So I try to follow and trust that energy because it is a divine direction. So this lady shares everything and by now it's 4 o'clock and then I see the date and the time and she said Mandir sirf 9 to 12 खुला होता है, so you have to go in the morning, आज नहीं जा सकते. And then I think कि आज ये कौन सा day है and I realize it is Thursday. And it is Thursday, 4 o'clock, so it's actually 7 o'clock. If it's 4 o'clock in Hawaii, it's 7 o'clock in Seattle, where the satsang starts at 7 o'clock, and I've just had a satsang. Obviously, I have no words to describe how blessed, divine, none of these words even can convey the power of Guruji's precise timing. How Guruji sends you somewhere, what Guruji words are coming out of someone's mouth, what Guruji is talking, you are listening. To the precision of the timing and the place and the day कि वो Thursday था, सब कुछ गुरुजी ने करवा दिया. मुझे मंदिर भी भिजवा दिया. मंदिर में मुझे I entered the मंदिर. वहां पे शुरू में गणेश जी की मूर्ति थी and वहां पे एक बेल थी and कहीं पे मैंने पढ़ा था कि मंदिर की बेल जाते वक्त बजाते हैं, not आते वक्त. So for whatever reason, same thing, I believed it. So I said, okay. I saw the bell and I thought, मैं अभी ये bell नहीं बजाऊंगी, मैं जाते हुए बजाऊंगी. Long story short, went inside, had beautiful darshans, had aarti and everything. जाने लगे, माथा टेका गणेश जी को, left the mandir and then thought, I forgot to ring the bell. But by now, it's nearly 12 o'clock. I just stepped back inside for 1 minute. And I thought, I can't just ring the bell. मुझे फिर से गणेश जी की परिक्रमा करनी होगी to ring the bell ताकि वो circle complete होगा. So I entered the mandir and now the mandir caretaker, she was closing the mandir. So she was doing the final parikrama at a very slow pace. और उन्होंने वो like नारियल प्रसाद उठा लिया, flowers जो भी थे and she was doing final. So I had to slow down. Instead of just doing fast, मतलब बिना सोचे समझे, like I was saying, moving the body but not moving the heart. So I had to slow down and really be present कि हम परिक्रमा कर रहे हैं, हम एक circle नहीं कर रहे हैं. Slowly I followed her and then जब वो हो गई, in whatever order, she turns around and she gave me the whole Narayana Prasad. Jai Guruji. Guruji has just blessed all of us, but I can only share my experiences, what I know of. But infinitely, even through every mistake and memory,
So my point is कि even if we remember to do something which we think is right, we only know what we know. Maybe it was not right. Maybe you should ring the bell at the beginning. I don't know. But based on what I knew and doing the best to my ability, waiting till the end, forgetting, going back and doing that, I can't apply logic to it. But गुरुजी की हर एक्शन में एक प्रिसिजन होता है, डिवाइन टाइमिंग होती है, परफेक्शन होती है. तो परिक्रमा भी हो गई, मुझे वो ब्लेस नारियल प्रसाद भी मिल गया. जय गुरु जी. And there are a million other satsangs like this. Uncle, I can go on. आप बताइए, how much time do I have? Shall I continue or shall I stop here? जी आंटी, अगर आप चाहें तो अभी कुछ टाइम हो रहा है, आप शेयर कर सकते हैं. ओके, तो फिर गुरुजी की मर्जी. तो I'll share my job satsang. You know, like I said, there were things which were not stable in my life, but in other ways, Guruji always created a very stable ground in my life, and that was always through jobs and immigration. तो वो तो एक बहुत ही बेसिक नीड होती है, right? That you should be. हमारे लिए, those of us who are immigrants in this country or in any country, we need a visa. We need that stability, and we need a visa which allows us to work. And then we need a job, and then we need that income which allows us to be financially just stable. So, उस डिपार्टमेंट में गुरुजी ने मुझे भर भर के ब्लेस किया है. What I can share in short is that in my 22 years in the US now, you know, my first job was at the Office of International Education when I was a student. And yeah, I went and I met people and I got that job and I was very happy and I loved that job. उस जॉब के अलावा मैंने शायद कभी किसी जॉब के लिए इंटरव्यू नहीं किया है. बाकी मेरे सारे फुल टाइम जॉब्स जिनमें मेरा वीजा भी स्पॉन्सर हुआ है, मुझे गुरुजी ने दिए हैं विदाउट एप्लीकेशन, विदाउट इंटरव्यू, बाय द boss, the leader of that organization, approaching me personally and saying, we want to give you a job, will you take this job? And me saying, okay, but here is my limitation, I need the visa too. And them saying, yes, for you, we have never done it before, but we will do it. This has happened not once with me, but multiple times. ये कौन कर सकता है in a country like the US, in an environment like what the US is, ups and downs with politics and wars and visas and immigration. आप काफी लोग यहाँ पे जो सुन रहे हैं, आई नो आप काफियों की खुद की एक्सपीरियंसेस होंगे या वीजा में डिफिकल्टीज होंगे या बहुत सारे सत्संग होंगे, बट आई कैन जस्ट शेयर दिस कि इस मेरे पाथ में गुरुजी की मेहर मुझे बहुत बहुत लाउड एंड क्लियर नजर आई है. One particular satsang I'll share about that is that in around 2011, no, it actually started before that. I'll share a couple of my job satsangs. So, in one job, I had wanted to leave it. मुझे वहाँ 4 साल हो गए थे and I was very burnt out. So I wanted some easier, lighter work and where I could work part-time and take care of my health. Health खराब होने लगी थी बहुत. So, I knew a lady who was very nice and we had a friend in common. One day, I was dropping off the friend to her house or picking up the friend, कुछ ऐसा था, when I was going to Satsang. And this woman is vegetarian. And she's very, very kind and generous. So I just had a lot of respect for her. What I knew, like she used to do a lot for her family. She used to just do a lot for anybody who came on her path. She used to भर के देती थी. Anything she could give, she would give. And I just had a lot of love and I didn't know her well, but I just really appreciate a human being who is like that. So I had a lot of respect for her, matlab dil se. So, and I knew that she was vegetarian, which is, anyways, it was unique. She's Vietnamese American. So ek din main satsang mein ja rahi thi, and when I had to come back in the same either pick up or drop off a friend, I brought her a plate of langar. I just thought, ये भी बहुत blessed है. I just wanted to be blessed. या जो भी था, मुझे एक feeling थी, so I brought her a plate of langar prasad from satsang and I gave it to her. But she just received it well. She said, thank you. I said, this is vegetarian blessed food. You eat it. ठीक है. So she used to work for a small startup and they were hiring for a position. मैंने उस जॉब की क्वालिफिकेशंस देखे and unfortunately मेरे पास कोई भी related experience नहीं था. I wanted to apply for that job because it was part-time and the pay was good, very good.
And I thought this is exactly the kind of lighter, comfortable job I need. Choti company hai, lightweight hoga. And I like the people. Lekin, I saw the qualifications. I thought about applying and I didn't apply because I was not qualified for it. I got a phone call from that company, not from this woman, from her colleague, saying, "We would like to interview you, Nitika, for this position." I was so amazed. And I said, "But I didn't apply for the job." She said, "Yeah, but we would still like to interview you." And I said, "Okay." I went, I interviewed with them, and I flatly told them, "I'm not qualified for this job. I don't have the experience. And I'll need a visa." And they said, "Okay, okay, interview ho gaya." And they called me back and they said, "We would like to offer you the job and we will do your visa." I mean, this whole thing is unheard of. And frankly, it doesn't make any sense that you would sponsor a visa. And mind you, ye three co-founders the. They are the owners of the startup. They are hiring only one employee, this position, and they are choosing to hire somebody who's not qualified for the job, who needs a visa. So उनके लिए और भी महंगा पड़ेगा, right? Because now just the whole thing is preposterous and doesn't make any sense. Except in Guruji's magical world, Guruji gave me that job. And 6 months before that, I was a finalist for a position for which I was very qualified and I didn't get it and I was very heartbroken and I felt very bad. I was like, ठीक है, नहीं हुआ. And 6 महीने के बाद, but that job would have been a tough job. It was more like my previous job, which I was trying to get out of. और मुझे बहुत काम करना पड़ता and it was even emotionally taxing. So in that sense, I didn't get it, but it would have been, there were other things I needed, right? But that thing ki aap mango nahi manno. By getting this job, I didn't get the job I wanted, but then I got something 10,000 times better and easier and much more what I actually needed. तो मुझे वो जॉब भी मिल गया, मुझे वो वीजा भी मिल गया और उसके बाद after 1 month of work, they said, "We are going to Mexico for a 10 days, all expenses paid retreat." And I went for free. And I got paid to stay in a villa which had 12 bedrooms and 3 swimming pools. And I just kept thinking, what is this? What is this? These kinds of experiences are unheard of except for in Guruji's world. Okay, that is one job experience. And then I'll tell you कि तो वहाँ पे 3 co-founders थे. Then the other one, I used to work out of her home office. So because it was a home office, I had a desk in that home office. वो घर उनका था, but मेरा office desk वहाँ पे था, and I had put a picture of Guruji on my office desk, like I always had on my office desks, I guess. So I had a picture of Guruji. So sometimes they would ask me curiously कि कौन है, and I would say ये मेरे गुरुजी हैं. तो उस lady का ऐसी कोई connection नहीं था. One day I went to work in that office. And that lady tells me, "I saw him. I saw him last night." I said, "You saw Guruji?" She said, "Yeah." She said, "In my dream, you were sleeping and he was standing over your bed and he was waving his arms and stuff like he was doing some magic." आप ये देखिए that a person who is not even a Sangat, who I don't even know what her faith or spirituality is, if she believes in any religion or God, completely out of the blue, through anybody Guruji can work, that she has had the darshan of Guruji blessing me while I'm sleeping. I was so amazed and so happy. And this is only one example. Multiple people have had a darshan of Guruji blessing me. And I'm so grateful. For whatever reason, if I could not receive Guruji's darshan at that time, it came through a neutral or open mind. For whatever reason, it didn't come to me, and this is only one example. ऐसे बहुत experiences हुए हैं मेरे साथ और लोगों के साथ. So Guruji, okay, ये भी हो गया. अब इस जॉब को जब छोड़ने का टाइम आया, मेरे अंदर एक फीलिंग आई ओवरनाइट कि I have to leave Seattle. My life here is ending. मेरा पाथ इस पार्ट चैप्टर खत्म हो रहा है. And out of the blue, again inspired by Guruji through someone's suggestion, why don't you move to New York? And I thought, yes, why don't I had always had a wish to live in New York. मैं यहाँ पे grad school के लिए apply किया था, but I didn't accept it for whatever reason. It was not the time. And then in 2011 April, I thought, yeah, this is the perfect guess. This is the right answer. I should move to New York. So then I started telling everybody in Seattle कि मैं New York shift हो रही हूँ.
And people said, really? Have you found a job? And I said, no, I'm not even applied for a job, but I am moving to New York. And I had so much conviction for whatever reason because I just felt that the next step in the path was clear. That, people would say, ki, sometimes, it was like July, August. I stopped making plans. So, anyways, on July 7th, Guruji's birthday, I got a call from someone. And he said, I heard the voicemail. मैंने phone नहीं उठाया. I heard the message कि Nitika, I would like to talk to you about an opportunity, something, something. And I just messaged him and I said, आज मेरे गुरुजी का birthday है. I always take it as a spiritual holiday. The way we do for Eid, Diwali, Christmas, anything, Guruji's birthday will not be disturbed by work. My only work is to be present to celebrate Guruji's life and joy. And seva of like dancing or whatever we can do for Guruji's birthday to make it blissful and beautiful like he has made our lives. So I didn't call him back, but I said, it is a spiritual holiday for me. I'll call you back tomorrow. Yeah, jo bhi tha. I called him back and he basically said he worked at an organization jiska headquarters New York mein tha. He said, we would like to hire you, but the job is part-time and it would be based in Seattle. So you keep your current part-time job and you take on this new part-time job and you work from Seattle. So on the one hand, I felt excited कि Guruji is blessing the New York path कि सामने से भी मुझे कह रहे हैं कि we want to hire you again. No application, no interview. But just getting a phone call on Guruji's birthday that we want to hire you for an organization headquartered in New York. But जो मेरी दो other constraints थी, I knew physically, health-wise, I did not want to maintain 2 part-time jobs and I would have to physically move to New York. So I was excited but disappointed and I believed in Guruji. I thought Guruji ne agar ye phone call is din pe di hai, I have to hold out for what is right. So I told him, I said, nahi, main 2 jobs nahi kar paungi. Mujhe ek job chahiye, full-time job chahiye, visa bhi chahiye hoga, New York mein chahiye. He said, ठीक है, उसके लिए हमारे पास बजट नहीं है, sorry. I said, ठीक है, I understand, also sorry, it didn't work out. ठीक है, जय गुरुजी. जाने दिया. कोई जॉब्स के लिए नहीं अप्लाई किया, मगर वो फीलिंग, वो जो इंटरनल फीलिंग थी ना, जैसे मैं आपको पहले बता रही थी, इट वाज गोइंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर कि जैसे एक मैग्नेट की तरह आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क. मेरे मन में कोई डाउट ही नहीं था दैट आई एम गोइंग टू न्यूयॉर्क. तो सितंबर के बाद आई स्टॉप मेकिंग प्लान्स विद पीपल वुड से अच्छा कम टू माय दिस व्हाटएवर दिवाली और आई विल सी यू एट दैट टाइम. आई सेड सॉरी आई कांट सी, आई थिंक आई विल बी इन न्यूयॉर्क बाय देन. वो कह रही थी अच्छा तुम्हें जॉब मिल गया है, मैंने कहा नहीं. इसे तुमने जॉब अप्लाई किया है, मैंने कहा नहीं. Okay. In September, I was on a yoga retreat. I got a text from the same guy. And he said, Nitika, we have gotten board, we have raised the funds, we have gotten board approval for a full-time based in New York position for you and we will sponsor your visa. Is this still your dream job? You are still our dream candidate. And I just said, Jai Guruji. I was so over the moon. Obviously, I said yes immediately. I went to Satsang that night, completely overflowing with gratitude. Just bhar ke like waterfalls of gratitude and love were coming out of me. And I took yellow roses. For whatever reason in my mind, yellow was the color of Shukrana. I took this bouquet of yellow roses. And I was beaming from head to foot. वो रोजेस गुरुजी के चरणों में चढ़ाकर मैं इतनी खुश, इतना स्माइल कर रही हूँ. मैंने अपना सर रखा, रोजेस रखे, पूरे सत्संग हो गई. एंड आई टोल्ड द संगत मुझे जॉब मिल गया, मैं तो जा रही हूँ. बट जो भी था बहुत खुशी थी. बट यू नो व्हाट, आई डिड नॉट एक्चुअली से शुक्राना गुरुजी. Because it was overflowing, I thought Guruji, मैंने सोचा भी नहीं. I just forgot in my sheer excitement and overwhelm of gratitude. I didn't remember to say anything to Guruji. Mostly when I see Guruji, I become speechless. I just think Guruji को तो सब कुछ पता है. मुझे कुछ बोलने के लिए, कुछ कहने के लिए, कुछ पूछने के लिए जरूरत ही नहीं है. So I don't say anything to Guruji, neither internally nor externally. So I didn't say anything. That night, Guruji came in my dream. वो ना एक आर्मचेयर पे बैठे थे और सामने एक ऑटोमन था. and he was sitting very comfortably. उनके पैर stretched out थे ऑटोमन पे. and he looked at me and he said laughingly, jokingly, lovingly, he said, एक शुक्राना भी नहीं कर सकती थी.
I thought, Shukrana Guruji, just I grabbed his feet, I sat down, and not even grabbed, just say politely, charan sparsh karte hain. I just grabbed them like they were a bouquet. I grabbed one foot in each hand and I just sat down and said, Shukrana, Guruji, Shukrana. तो आप देखिए, even though the feeling was there of gratitude, Guruji taught me that you have to say Shukrana. You have to give it back to Guru. You just have to acknowledge for whatever reason इसका क्या महत्व है. Probably in my living life I will not understand. Maybe in eternal life Guruji will divinely explain, or I will understand, hopefully. But for whatever reason, saying Shukrana for what you have received from Guruji is very, very, very important. And I think the more times, the better. At least 3 times, like I showed you in the power of that mantra jap 3 times. And the more specific you can be, the better. Guruji, Shukrana for this job that you have given me, for this new life you have given me, for this new chapter, for anything. जब आप specifically बोलने लगे, आप देखेंगे कि वो शुक्राना endless है और आप लाइफ लॉन्ग शुक्राना कर सकते हैं. और अगर आप लाइफ लॉन्ग शुक्राना कर रहे होंगे तो आप किसी चीज पे अटकेंगे नहीं, किसी दुख पे, किसी सौरव पे, किसी मांग पे, किसी कठिनाई पे, किसी गुस्से पे, किसी भी चीज पे आप रुकेंगे नहीं, बिकॉज हमारे पास टाइम ही नहीं है कुछ और करने के लिए, ओनली शुक्राना. So Guruji had to come despite all my feelings to come and tell me. शुक्राना भी नहीं कह सकती थी, इतने प्यार से उन्होंने मुझे कहा कि वो एक स्वीट सा लेसन बन गया लाइफ के लिए. which and then I heard after sharing the satsang in another satsang, I heard another auntie had gotten the same words and the same message from Guruji. तो ये message, कुछ messages specific होते थे कुछ लोगों के लिए और कुछ universal होते थे. That Guruji should say this to 2 different people. It is a universal message. Jai Guruji. So that is how I got another job which I never applied for, and a visa and everything, and moved to New York, and that began the next path for me. And I'll share उसके बाद health related. आपको याद है कि गुरुजी ने मुझे कलश दिया था. By this time in Seattle, मेरी health बहुत खराब रहने लगी थी. I was constantly sick. If I caught a cold, I would be very sick with a respiratory infection for like 6 months with a secondary infection or this or that. I'd become very weak. I had become just tired. मतलब सारी चेहरे की बॉडी की ग्लो चली गई थी. And I was still in my 20s. I was, but very, very not in good health. So, and I was on a lot of medications by then. मतलब ये iron, ये iodine, ये this, that, like supplements or this kinds of things. So I went to New York, and one day, one of the early days of my new job, this blessed job, I remembered, for whatever reason, वो कैसे याद आया था कि गुरुजी ने मुझे कलश दिया है. मैं क्यों इन दवाइयों की, I think I had heard a satsang which reminded me कि मैं क्यों रैंडम दवाइयों डॉक्टरों के चक्कर में पड़ गई हूँ. गुरुजी ने मेरा वो रास्ता खत्म कर दिया था. गुरुजी का कलश, that purifying अमृत is all I need for healing. मुझे अपना कलश साफ करना चाहिए. As I see this, I'm reminded that again I need to साफ करो my कलश, जो मैंने कल देखा था. तो उस दिन रात को जब मैंने कलश साफ किया, एक्चुअली उसमें से ना पानी लाल होके बाहर आ था. बिकॉज नॉर्मली आप जैसे नींबू या नमक से साफ करेंगे तो वो ग्रीन होगा ना, ऑक्सीडाइज होके, वो अभी भी होता है. उस दिन पानी उसमें से लाल बह रहा था. एंड उसको देख के मुझे बहुत रिग्रेट भी हो रहा था कि कलश साफ नहीं है, बहुत ही साफ नहीं है, और बहुत मतलब पता नहीं लग भी रहा था ये क्या लाल गंगा बह रही है इसमें से. अगले दिन मैं सोचा कि अब ये कलश का अमृत कितना प्योर होगा, डिवाइन नेक्टर की तरह. मैं उठी, I took a sip of that amrit. It was the most bitter thing I have ever tasted in my life. It was साफ था, बिल्कुल शाइन कर रहा था. बट वो अमृत इतना कड़वा, और उसमें मेरे पेट में ऑलमोस्ट लाइक अ दर्द, इतना कड़वा. जो ग्लास मैं 2 सेकंड में पी जाती थी, वो मुझे आधा घंटा लगा. सिप बाय सिप, खड़े खड़े पी जाती थी उसको. मैं बैठूं, धीरे धीरे एक से बड़ी मुश्किल से पीऊं, वो मेरे गले से नहीं उतर रहा था. लेकिन वो अमृत था गुरुजी का. देयर इज नो वे आई वुड थ्रो दैट. एंड
उसको फेंकने से तो मुझे और भी डर लगे, मैं तो लाइक माई लाइफ वुड नॉट सर्वाइव विदाउट गुरुजी's अमृत, इतना बड़ा डर था कि देयर इज नो वे आई विल नॉट ड्रिंक दिस। पी लिया बड़ी मुश्किल से, बड़ा टाइम लगा के, एंड बाय द टाइम आई वाज फीलिंग फिजिकली इल, गले से लेके पेट तक दैट फीलिंग ऑफ इलनेस हैड स्प्रेड एंड आई वाज फीलिंग सो सिक आई कुड नॉट गो टू माय न्यू जॉब। I had to call them and take a sick day, which as you can imagine is not an easy thing to do. आप अपने पहले हफ्ते में या दूसरा दिन है ऑफिस का और आप कह रहे हैं कि मेरी तबीयत खराब हो गई, मैं ऑफिस नहीं आ रही, इतनी लाइक सो सिक आई गॉट। एंड मैं दोपहर को कभी नहीं सोती, बट आई हैड नो चॉइस। मैं अभी उठ के नहा धो के अमृत पिया था एंड आई हैड टू गो स्ट्रेट बैक टू बेड एंड आई फेल asleep. दिस इज अनदर मिरेकल, मुझे दोपहर को नींद ही नहीं आती है एंड आई फेल asleep. And I had a darshan of Guruji. And I don't know why, it was a very strange darshan. During it, I saw that there is a tennis racket going through someone's throat. Guruji is talking to that person. And he's saying something like, either you can believe the one inside of you, or you can believe me. Kuch aisa tha. But the exact words I don't remember. They are written somewhere, and hopefully, Jai Guruji willing, I will find them so I can share them with Sangat precisely. But uska meaning, the way Guruji intuitively made me understand then, is you can either think for yourself with your egoic mind and lead your life, or you can believe the voice inside of you, which is me, which is Guru, and let that voice make the decisions and guide those decisions. Which in my case, the example was the medicines versus the kalash, right? कि आप सोच सकते हो कि I need this medicine or that medicine or I need a doctor, या फिर आप गुरुजी की दी हुई दवाई को हमेशा के लिए एक बार मान जाओ। गुरुजी ने अगर आपको एक चीज कही है, जैसे मुझे एक कलश दिया था, he does not need to come and tell me every day, अब आप कलश पियो, अब आप अमृत पियो, अब आप अमृत पियो, right? That is done. वो गुरुजी की एक कही हुई बात हमारे लिए लाइफ टाइम लेसन है. वी कुड एक्ट लाइक एवरीडे गुरुजी सेइंग द सेम थिंग टू अस. सो एक बार ही गुरुजी मेरे दर्शन ड्रीम में दर्शन देके उन्होंने मुझे कहा था, बिकॉज मैं बहुत चीजों से बहुत डरती थी. कभी मैं लोगों से डरती थी, कभी मैं समथिंग बैड विल हैपन, कुछ बुरा हो जाएगा उससे डरती थी. मेरी पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे थे कि मेरे अंदर एक डर था. तो इस ड्रीम में मैंने देखा कि एक रूफ टॉप पे एक आदमी खड़ा है राइफल लेके. मेरे सामने गुरुजी खड़े हैं और मैं डर रही हूँ. मैं गुरुजी को कह रही हूँ, देखो गुरुजी, लुक एट दैट मैन, समथिंग बैड इज अबाउट टू हैपन. गुरुजी मुझे कहते हैं इन इंग्लिश, व्हाट इफ देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड थिंग. ही डिड नॉट से एनी मोर, बट द मीनिंग, व्हाट इफ देयर इज नो सच थिंग एज अ बैड थिंग. If there is no bad, there is no good. Then it is only a thing. Whatever is happening by Guru's will. Whatever is happening, जैसे मॉम कहते हैं एक पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की मर्जी के बिना. तो how can we think कि मैंने ये कर दिया या ये अच्छा हुआ या उसने मेरे साथ बुरा किया? We cannot think that. That just means जो हुआ वो हुआ. And we accept that. Once we accept that, there can be a kind of grace and surrender. That is the beginning of surrender, right? That this is happening. In the beginning of surrender, then we can go to the next key. What does my guru, who is a teacher, want me to learn? If I was going to pass this test by my guru's teachings, what would I be practicing? What would I be doing? So then the question is never why. मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसी खराब चीज. क्योंकि कुछ अच्छा होता है तो हम ये नहीं कहते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. जब मुझे ये सारी जॉब्स और इमिग्रेशन और ये सब मेरे साथ अच्छा हुआ, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि गुरुजी आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया. I just thought, Guruji, obviously millions of people are in trouble and they need jobs and visas. I just know for whatever reason you have given me this. Thank you. I don't know why. I don't know anything about, am I special? Am I cursed? Am I blessed? Doesn't matter. You have given me this and I am so eternally grateful. So it's the same thing. Then we just assume that for whatever reason, Guruji ne mujhe संभाल के रखा. He gave me one stability when I did not have something else, right? Family or support or relationship or whatever. He gave me that.
So we can only think that गुरुजी मेरे लिए अच्छा ही कर रहे हैं, गुरुजी जो भी कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, कर्म काटने हैं. So that also leads to the second message of one, we accept everything that happens without asking why, just accepting it. And two, we give it our best foot forward. हम अपनी तरफ से we face it with positivity, with calm, with strength, knowing that Guru's grace is upon us, Guru's hand is upon us. And thirdly, we would forgive anyone and everyone for everything. हमारे साथ कोई कुछ बुरा कर ही नहीं सकता क्योंकि दुनिया में कुछ बुरा है नहीं, क्योंकि गुरु ने कहा है. That means everything is just simply happening. And whoever has come in the form of a teacher, has come in the form to teach us something and to karm kato. उस action के through हमें जो भी सीखना था, all we can do is in the guru disciple ratio, we can just wear the hat of the student and say, what do I have to learn? What do I have to practice based on my guru's teachings? Guruji has said, निंदा चुगली मत करो. हम किसी की पीठ के पीछे उनकी कोई बुराई ना करें. और इसका डीपर मीनिंग, आई वॉज ऑल्सो वंडरिंग अबाउट दैट, एंड देन आई हर्ड द शपथ विच गिव मी द आंसर, बिकॉज देन आई वुड प्रिवेंट माई फैमिली फ्रॉम, दे वुड इफ यू हैव सॉरो कि अच्छा ऐसा हो गया, समवन डिड समथिंग, इट हर्ट माई फीलिंग्स, देन आई वुड से नहीं, मुझे नहीं सुना, मुझे कुछ नहीं सुना, मुझे कोई निंदा चुगली नहीं सुननी. बट देन इन अ शबद आई हर्ड द डीपर मीनिंग कि इट्स नॉट अगर किसी ने सच में कुछ ऐसा किया है विच इज ट्रू, एंड स्पेशली इफ वी से इट टू देम और इन फ्रंट ऑफ देम, उनकी पीठ पीछे नहीं है. एंड सेकेंडली, if it is true, then they have to change the truth of the fact, right? Then it is not निंदा. If we are saying factually कि ऐसा हुआ, वो एक सच है, वो निंदा नहीं है. If we are saying कि वो person खराब है, वो निंदा है. आप फर्क देख रहे हैं? We are talking simply about a fact or an action that this happened. This was done maybe by this person's hand. That is a fact. ये हम कह सकते हैं. And maybe we can say that I feel hurt. वो हमारा सच है. But we cannot say that that person is bad. Maybe that person had a very good intention, but still for us it was a bad impact. ऐसा भी हो सकता है. Intention और action में फर्क हो सकता है. We don't know that. So Guruji has told us not to judge anyone. इसलिए हम निंदा चुगली नहीं कर सकते, because Guruji is to bless everyone. Who are we to judge if God is forgiving and blessing everyone? So we also have to accept everything as it is, not to ninda chugli, and forgive everyone for everything, knowing that it was a teacher for us, and that just points something out to us about what we have to do or learn, and we have to sit with that question. And no ABCs, no abuse, no blame, no criticism. And I personally am also guilty of this. जब hurt feelings होती हैं, it is easier to say कि उन्होंने ऐसा किया, and harder to just feel hurt or move on and break those human ties. All human relationships are karmic relationships, and there is some illusion over it. तो हमें तो यही नजर आएगा ना कि जो हमारे ह्यूमन रिलेशनशिप था, ये फ्रेंडशिप है, ये फैमिलीशिप है, ये है. But the true relationship is only with the Guru. So everything else in human relationships is like a drama, which is acting out whatever we need to see and whatever we need to improve in ourselves. And to this also, I was seeking an answer, and the answer I got is that all human relationships are a mirror. So whatever we see, किसी और में हमें जो खामियां दिखती हैं, वो हमारे अंदर ही हमें कुछ दिखा रही हैं. So instead of pointing outwards, we could point inwards and see मुझ में क्या है जो इस डायनामिक में ये खराब चीज निकल रही है, जो मुझे अच्छी नहीं लग रही. Again, because Guru has said there is no bad thing and there is no bad person, because right, एक जोत से सब जले तो कौन भले कौन मंदे. We are all equal, we are all divine. सबके अंदर गुरु की जोत है, so everyone is divine, and we have to treat everyone with that divine respect the same way we would treat anyone in Sangat, because वो संगत है, because वो गुरुजी के भक्त हैं. So in the same way, whether we know that Sangat, whether it's out in the world, it's a co-worker or a stranger, they still have that jot in them. Maybe we don't think they are Sangat today, but tomorrow they could connect with Guruji. So then we would say, are we going to treat them better? No, we would treat everybody as Sangat or potential Sangat, because one day we were not Sangat. When I was 18, I was not Sangat. When I was 19, I was. तो ये सब temporary और transitional चीजें हैं. कब गुरु ने किस soul को bless करना है, बुलाना है हमारे through, we are at all times a reflection of our Guruji.
if we behave negatively in the world, then that is a reflection कि हम एक स्कूल में गए, हम एक क्लास में गए. What is the teachings? We are those life teachings. Our behavior, our words, our actions, our thoughts, and our intentions. हमारे जो innermost, deepest thoughts, intentions, or feelings हैं, that is actually the place where we have to purify from, because the outside is easy. We have to not only control our tongue, we have to internally purify our hearts and minds. अगर वो जगह साफ होगी, तो जो बाहर निकलेगा वो सफाई में से निकलेगा. अगर अंदर का साफ नहीं होगा, बाहर से वी कैन प्रिटेंड टू बी नाइस एंड गुड एंड स्वीट एंड काइंड, बट वो सच्चाई नहीं है. गुरु नोज योर हार्ट. तो अगर गुरु ने आपके दिल के मंदिर में बैठना है, आपको वो मंदिर साफ करना होगा. एंड वही बाय दोज नेगेटिव फीलिंग्स, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गुरुजी हमें दिखाते हैं कि किस चीज से हमारा मंदिर साफ नहीं है, हमें वो साफ करना होगा. जब उसकी सफाई होगी, तभी तभी गुरुजी के दर्शन होंगे, तभी दरबार में संगत आएगी, तभी वो प्यार गुरु का बढ़ता जाएगा. वी हैव नथिंग टू फियर. गुरुजी ने ये मुझे बहुत दिखाया. देयर इज नथिंग टू फियर, देयर इज ओनली लव. Everything which is fear is not love. Everything which is love is not fear. Guruji can be unconditional love, and we are humans, so we are not so unconditional. But forgiveness is part of that love. हम किसी और के साथ वैर ना रखें, निडर रहें, ना हम किसी को बैडली ट्रीट करें, ना हम किसी से बैडली ट्रीटमेंट लें. You keep a distance within which we can be loving and kind towards everybody and compassionate and forgiving towards everybody. If that closeness does not allow for that, then some spaciousness can allow for that. तो ये भी मैंने देखा है गुरुजी की संगत, स्टूडेंट, डिसाइपल, चाइल्ड बन के, कि गुरुजी changes your संगत all the time. Who was around me at 19, at 25, at 30, 35 onwards. It changes all the time because we keep changing as Guruji changes us, as we keep going through the disciples, through the classes. Guruji puts those next to us through whom we have to learn. It is not better or worse. It is not higher or lower. We are all equal. It is only through whom we have to learn particular lessons. All of life is a journey of simply learning. That is what it means to have a guru. So, infinitely grateful to have all of these learnings and teachings, and Jai Guruji for the love and seva and honor and opportunity of sharing about Guruji, whatever Guruji wants shared. I hope I have not said anything which Guruji did not want me to share. So I'm so sorry, Guruji, if I made any mistakes today in this satsang or at any point of time, which all the time is happening. But sorry, Guruji, and Shukrana, Guruji, again for this blessing to connect with Sangat. Thank you so much. Jai Guruji.